we have seen cases in which the reaction is given, and we are writing the cell representation. We will take one more, and then we are going to also talk about how to write the cell reaction when, how to write the cell reaction. Okay, fine, Amla, but I have to start teaching them. We have to see how to write the cell reaction if the cell representation is given. If the cell is represented, then how can you write the reaction of the cell? How can you write the reaction of the cell? So one more example we'll do from the last lecture itself. Let's suppose we have hydrogen gas plus copper 2 positive. It is getting converted to 2H positive plus copper. Right? Now, first of all, we'll see what is happening to hydrogen. Going from H2 to 2H plus. Now, in this case, hydrogen is having an oxidation state of 0 because hydrogen is with itself, there is no charge on it, neither it is attached with any other electronegative element. For example, if we have HCl, then chlorine will be negative, hydrogen will be positive, hydrogen will be positive oxidation state. Right, but right now, hydrogen is having a 0 oxidation state. Here it is having an oxidation state of 1 positive. So 0 to 1 positive, it is obviously oxidation, and oxidation will occur at 2. And we are moving from copper 2 positive to copper. And in this case, obviously, reduction is taking place and it is a cathode. Reduction is taking place and it is a cathode. How will we write this? Very easy. Anode, bridge, cathode. Yes, but I can hear you. But if you will keep your mic on for a longer time, then only I can hear you. If you will turn your mic off, or if it is automatically getting turned off, then I cannot hear you. So in anode, you will plus bridge. In cathode, we are using copper to copper. Now, we very know that when we say hydrogen, when we say copper, copper is a metal. Fine. So reaction can occur at metal. But when I say hydrogen, then we also know hydrogen is a gas. And how can we insert gas inside the solution? So we cannot have rod of gas. Right? That is why we insert the gas in a glass tube, and in that glass tube we also have a platinum wire. We have a wire and then we have a platinum plate. So platinum plate, it provides the surface for the reaction. We have to also show that we are having a platinum wire for hydrogen gas. So we have platinum wire for hydrogen gas, so H2 slash right? H2P. So if it is an anode, then platinum will be before hydrogen gas. If it is cathode, so जहाँ पे भी होगा, then hydrogen and platinum should be together. तो आपको आ जाएगा, उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. What you should understand that platinum is not taking part in the reaction. I will write it here. Platinum is an inert electrode. This used to provide surface for the reaction, which is used to provide surface for the
Raise your hand once you're done. Amna तो शायद अभी क्लास में आपने अभी दे आपना 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 अभी दे रहे क्लास. Yes, sir. Done. Thank you very much. Thank you very much. ऐसी आवाज देना पड़ेगा सबका है ना लगातार तब बच्चे जवाब देते हैं. ठीक है. चलिए now we are going to look at a different type of question. Please write with me. Write the anode cathode and net cell reaction for following sets and indicate number of electrons involved in the following set. Aiming it. We will be given a cell, and then you have to write the anode reaction, cathode reaction, and the net cell reaction. And then you will also come to know the number of electrons. Okay. So I will show this how to do, and then you will do the other problems. And I is getting converted to nickel 2 positive. And Ag positive is getting converted to Ag. Ag positive is getting converted to Ag. So first of all, I will write the reaction that is occurring at cathode. The reaction is nickel. It is getting converted to nickel 2 positive. Plus 2 electrons. Right? In cathode, Ag positive is converting to Ag, so it is only 1 electron. Jitna सारे दोस्तों को neutralize it, it need 1 electron, and get what is Ag. Now, one thing that you have, and I will also write this down in your notes, and you will get it. The half cell reaction, the anode and the cathode, please don't write anything. Please don't write it. Then only you will understand what is happening. Just repeat after me. Like when I say nickel is getting nickel 2 plus, then you should turn 2 electrons. Only no need to turn the math one. But don't write now. Now the copying is not the aim here. Understanding is the aim. So please try to understand right now. Whenever we write this half cell reaction, that is the cell reaction of anode or cathode, they will have electron attack. Those cell reaction, those half cell reaction, the reaction at anode, the reaction at cathode, they will be including electrons. But cell reaction should not contain electrons. Should not contain electrons. In order to do that, we have to balance the electron in anode and cathode. So what I will do, I will multiply the second equation completely by 2. So when you multiply this by 2, this will become 2Ag is 2Ag.
and then you can cut this. This is of no use. And you have to cut something. Now write the net cell reaction. Net cell reaction will be nickel. You have to use this one, right? Nickel plus 2 Ag positive. Now 2 electron is here, and 2 electron is going to give you nickel 2 positive plus 2 Ag. If you look at the number of electrons used, it is 2 electrons. Okay. Once you balance the electron, please copy this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna, Mariam Batul, Mariam Gahani, Sara, and Taha. Please let me know if you did not understand something I've explained here. After that, you have to do the question. Just waiting for Mariam Batul. चलिए प्लीज ट्राई जितना भी दिमाग लग रहा है आप लोग लेकिन प्लीज ट्राई कीजिए है ना राइट द सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट बी क्वेश्चन zinc is getting converted to Zn2 positive Zn2 positive with the salt bridge and H plus it is getting converted to hydrogen gas and because of hydrogen gas we need platinum wire for the reaction to occur. Platinum is not going to take part in the reaction with any ion. Write the anode reaction, cathode reaction, balance it, balance the electron. Then write the complete reaction. Sir, can you scroll back 1 minute? सारा आपने अपना टाइटल हटा लिया है नाम में से I have removed your title. What's it? You used to come to the class. There was also a title with your name attached. The complete 11th standard, right? You used to keep a title, na? Huh? Yeah. So, what happened? You are still in that title. Yeah, you understood things. Yes, sir. But you understood things. Really? Yes, sir. So that's good. So you're not part of that title anymore, right? Gee. That's
मैंने बताया नहीं था ऐसे बता क्या तो इफ यू रिमेम्बर आई आस्क्ड व्हाट्स द टाइटल फॉर बट आई अंडरस्टूड अब ये बातें जो है लाइक आई अंडरस्टैंड मतलब ओनली मी अंडरस्टैंड इट एंड बाकी बिकॉज़ most of you were not present in the 11th session. Okay, that's good. That's nice to know. किसने समझाया आपको सारा जी किसने समझाया आपको खुद आपको हिंदी नहीं आती ना मुझे आती है हाँ सारा बताएं खुद ने आती है ना किसने समझाया आपको कि उस टाइटल में कुछ नहीं रखा है अच्छा खुद नहीं दैट तो बेस्ट है यार वो तो बेस्ट है चलिए गुड आपको लगता है वो उतना ध्यान नहीं देते लेकिन ध्यान देते हैं no 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 Taha. Taha, do you have my if you don't have my number then please send it on here this 917530998007 can we answer on the WhatsApp very good so Taha, very good waiting for others जल्दी आंसर कीजिए yes so can very good that is correct very good बाकी लोग जल्दी आंसर करें Sir, I'm unable to do the cathode part. you are unable to do the Cathode part. अच्छा so far you are a part of 12 C1 na sorry C2 right Soha आप तो इतने दिन में आते हैं आप तो मैच हो जाते हैं सोहा यू आर पार्ट ऑफ वन सी टू ना जहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चल रही है राइट केमिकल काइनेटिक्स करेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे आप कब आई थी क्लास में आपका
काइनेटिक्स के लास्ट क्लास में तो शायद थे आप, लग रहा है आपको, जैसे तुमको बताएं। माइक ऑन कर लीजिए भाई, सोहा माइक ऑन कर लीजिए जल्दी, बात जैसा लड़के हैं आपका। हाँ सोहा माइक ऑन करे प्लीज। सोहा 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 माइक ऑन करे प्लीज जल्दी। सोहा माइक ऑन कीजिए। बड़ा ठीक लगती है आपको माइक नहीं ऑन कर। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नहीं है ये, केमिकल काइनेटिक्स क्लास दैट इज विल सी टू, दैट विल बी एट 6:30 के से 9 PM इंडिया टाइम। तो ये देखते हैं एनोड, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या हो रहा है बताइए, कौन पूछ रहा? हाँ सुहा बताइए। जी सर, ये पोर्शन मेरा हो गया था ना? आप बताइए। सर ये पोर्शन मेरा हो गया था राइट? ये तो आप बताइए ना, आपने किया क्वेश्चन, हुआ या नहीं हुआ आपका? वो हो गया था, बट द व्हाट्सएप इज स्टिल सेंडिंग मी ये बैकअप क्लास की लिंक। बैकअप क्लास, ठीक है, आपका नाम हम बता दें, ठीक है। आप काइनेटिक्स वाली क्लासेस में आ रही है, केमिकल काइनेटिक्स वाली क्लासेस में आ रहे हैं ना, ठीक है, छोड़ दीजिए फिर बस, जैसे बैकअप क्लास नहीं, बैकअप हो गया। हाँ मरियम बतूल का शायद सवाल था, लेकिन कैथोड पार्ट नहीं कर पा रहे, राइट मरियम बतूल? मरियम यस सर। माइक ऑन। हाँ प्लैटिनम को तो छोड़ दे, प्लैटिनम का कोई रोल नहीं रहा था रिएक्शन में, करेक्ट है मरियम? हाँ सर। H plus is getting converted to H2, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए H plus प्लस एक इलेक्ट्रॉन डालिए, लेकिन क्या मिलना है आपको? H2 मिलना है। बैलेंस करते हैं आप, बिकॉज हियर वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा आपको। एंड इफ 1 H plus needs 1 electron, 2 H plus will need 2 electron। हो गया, ठीक है। now we have 2 electron, 2 electron, तो ऐसे ही कैंसिल। zinc plus 2H positive gives Zn2 positive plus hydrogen gas, है ना? number of electron used, it is how much? 2 electrons are used। तो कुछ क्या हो? So we just have गई। both the हाँ बोलिए equations. बोलिए। what? We just have to mainly balance both the equations, right? तो बैलेंस की इलेक्ट्रॉन, हाँ बैलेंस तो करना, चलिए ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, सब ध्यान देना है ना, प्लीज सिर्फ ध्यान देना। Okay, मान sir. लीजिए निकल है, और निकल से आपको कहाँ जाना है? 2 पॉजिटिव जाना, निकल 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान, व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज, एक निकल यहाँ पे, एक निकल यहाँ पे, तो रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटम इट इज बैलेंस, बट इट इज नॉट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ चार्ज, है ना? तो जैसे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप इसी तरह से चार्ज को भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओवरऑल चार्ज विल ऑलवेज बी व्हाट, ऑलवेज बी ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा, तो मतलब अगर कहीं पे पॉजिटिव आ रहा है तो कहीं के साथ नेगेटिव ही आए, तो भी सम नेगेटिव समवेयर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी डू, 2 पॉजिटिव, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। So this side is neutral, कहीं पे कोई चार्ज नहीं है। In this side, if I look at overall, यहाँ पे we have +2, यहाँ पे we have -2, because nickel पे we have 2 positive charge, electron पे we have 2 electrons, that means 2 negative. So overall, this is also 0. Fine. Yes. Similarly, when I talk about Ag positive and 1 electron giving us Ag, so here also what we are doing? Why we are adding 1 electron? Because this Ag is neutral. Here we are having 1 positive charge. So how can we balance 1 positive charge? By having 1 electron. By having 1 electron. ठीक है, प्रोटॉन अगर हम दूसरी चीज हम ये कर सकते थे, what other thing that we could do is, sir why don't we write like this, अगर Ag पॉजिटिव है, यहाँ पे Ag plus 1 प्रोटॉन कर दीजिए, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, here also we are having positive charge, here also we are having positive charge, but obviously 1 proton cannot be, that it cannot exist, the proton तो न्यूक्लियस में होता है, फिर ये किसी कोई एलिमेंट हो जाएगा ना। individual proton cannot exist, individual proton cannot exist, ठीक है। individual electron can exist, but proton nucleus with the nucleus exist करती है, right? Nucleus can exist, and that nucleus will be of some particular element, फिर वो element आ जाएगा। चलिए तो Ag positive, और अच्छा एक और दिक्कत उसमें क्या होगी, प्रोटॉन अगर आप यहाँ पे लिखिएगा, नहीं चलिए ठीक है, वो दिक्कत नहीं है।
Pb positive plus क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लिखेगा, ठीक है ना। तो व्हाट वी डूइंग, यहाँ पे चार्ज की बैलेंस है एंड द नंबर ऑफ एटम्स आर आल्सो, ये बस बताने के लिए लिखना नहीं है ये सारी चीजें, ठीक। तो बस खुद को आपको प्रोसीजर करना है, हाउ वी आर बैलेंसिंग, हाउ वी आर डूइंग थिंग्स। हो गया यहाँ तक, रेज योर हैंड वंस यू डन। सी पार्ट भी खुद से कीजिएगा, सी लिखिए। एल्यूमिनियम से वी आर कन्वर्टिंग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव with short bridge of copper to positive and copper. तो आमना आपने भी आंसर दिया। आमना 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 का माइक आमना 2H प्लस में सही लिखा है आपने, लेकिन ठीक है, पहले बैलेंस करना चाहिए था आपको। देखिए इफ यू लुक एट द कैथोड रिएक्शन ऑफ H प्लस, कैथोड रिएक्शन दिख रहा है आपको H प्लस का आमना, जी वहां पे इन द रिएक्टेंट साइड वी हैव 1 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन दिखेंगे, देखिए यस सर H2 है ना। तो पहले उसको बैलेंस बैलेंस करना करेंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बैलेंस दैट, कैथोड पहले बैलेंस हो जाए, उसके बाद सेल रिएक्शन, ठीक ओके है सर आपका। ओके, फर्स्ट ऑफ जी ऑल वी आर गोइंग टू बैलेंस द कैथोड, देन वी आर गोइंग टू लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है नहीं है बाकी। Now what the problem you see in the cell reaction, you have written 2H positive in the reactant side, that means there are 2 hydrogen atoms in the reactant side. कितने reactant में है hydrogen atoms, आमना? How many hydrogen atoms in the reactant side? 2H 2, right? There are 2 yes hydrogen atoms in the reactant. And how many atoms in the product? 4 And so that is not balanced, right? So वहाँ पे yes sir 2H2 नहीं होगा, there will be only H2 will be there, only H2. ओके सर ठीक है, मरियम बतूल, प्रॉपर पे 3 पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। मरियम बतूल, आई वुड प्रेफर द आंसर इन द नोटबुक, प्लीज। No need to write in the chat. Please don't write in the chat. I would say, please don't write in the chat. सर एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं है अभी, मैं किसी और के घर पे हूँ इसलिए यह सेंटर उनसे मांग लीजिए फोन, वो खुद किसके घर पे यूज मांग, वो भी फोन, अच्छा वो खुद। बोलिए हमको बहुत जरूरी काम है, पढ़ाई है, मेरे फ्यूचर का मामला है, 2 मिनट के लिए दे दो। नहीं सर, उनकी खुद की क्लास चल रही है। अच्छा ठीक है, मैं भी बता, अच्छा कोई दिन सर आपको मैं फोन थोड़ा कर देगा सा फिर। बता दूं, मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो बोथ 5 इलेक्ट्रॉन हो गया एंड देन आई कैंसिल्ड इट आउट। वाह, 5 कैसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में भाई, थोड़ा तो सोचो, मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा। वैसे नहीं सर, कैंसिल करने के लिए। नहीं नहीं, आप मल्टीप्लाई किया, दैट्स गुड, बट व्हेन व्हाट डिड यू मल्टीप्लाई, सर आपकी आवाज थोड़ी सी खराब आ किस रही है। तरह पढ़िए, ठीक है अभी ठीक है। कैन यू से समथिंग? How is it now? Yeah. हाँ I'm asking you, uh, what is the anode reaction? Tell me the anode.
Sir, aluminium एनोड gives बताइए, व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड? 3 electrons. एल्यूमिनियम गिव्स, एल्यूमिनियम So, गिव्स, बोलिए तो। aluminium plus 3 electrons. एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम प्लस इलेक्ट्रॉन। Hmm. ठीक है आपके। Aluminium 3 positive plus 3 electrons. ठीक, सही है। आपने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया. बैलेंस, ठीक है। 3 into 2, सर मुझे सुना ही नहीं दे रहा. 3 into 2 कितना होता है? 6. 5 तो नहीं होता ना? Sorry. 5 नहीं होता है ना, 6 ना होता, आप 5 बोल रही थी। Oh, sorry. 5 कह रहे थे Sir, आप। हाँ 6. Sorry. कोई बात नहीं। 3 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था. नीचे 3 से और ऊपर 2 से, तो both were 6 and then I cancel it out. नहीं नहीं, ऊपर नीचे नहीं नहीं नहीं, ऊपर नीचे हमारा लैंग्वेज नहीं, तो हम I'm a bit strict about this, करेक्ट लैंग्वेज। एनोड में आपने कितना, एल्यूमिनियम वाले पे कितना मल्टीप्लाई किया, कॉपर पे कितना मल्टीप्लाई किया, इस तरह से बात करेंगे। जी बताइए, एल्यूमिनियम वाले पे Okay, कितना मल्टीप्लाई किया आपने? 2. 2, और कॉपर वाले पे? 3. यही किया है ना, या उल्टा कर दिया था? नहीं 3 किया था नीचे कॉपर पे. तो, हाँ कॉपर पे, ठीक है, सब सही आया। लेकिन आपने चैट में कुछ और ही लिखा है, आपने लिखा कॉपर 3 पॉजिटिव, 3 कॉपर 3 पॉजिटिव, 3 कॉपर 3 पॉजिटिव होगा ही नहीं। 3 कॉपर 3 पॉजिटिव नहीं होगा, 3 कॉपर 2 पॉजिटिव होगा ना। मैंने 2 पॉजिटिव लिखा है, चार्ट में गलती से 3 पॉजिटिव लिख दिया. हाँ, अब हम तो कॉपी नहीं देते हैं ना, अफसोस है आपका फोन नहीं है, तो हमको चैट वाले भी बताएंगे। तो मैं फोटो सेंड करने का ट्राई करती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने सही लिखा है ना, तो ये समझ में आना चाहिए, ये तो मतलब मैं सीखा था आपको, तो ध्यान रहेगा आपका, इधर ध्यान ना भटके, फिर कुछ बातें कह देते हैं। आई थिंक अभी किसने भेजा भाई, हम भूल ही जाते हैं। हाँ, ठीक है, जिसने भेजा उसने मैंने कहा नहीं भेजा है। हाँ, कहाँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं लिखिएगा क्या? 3 एल्यूमिनियम, सॉरी 2 एल्यूमिनियम लिखना चाहिए ना आपको। चलिए ठीक है, देखिए, एनोड एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम 3 positive to neutralize it with 3 electron. Then cathode copper 2 positive plus 2 electron. What to give? Copper. The anode we will multiply by 2. The cathode will multiply by 3. 2 से multiply करें तो ये, तो चलिए I'm writing the coefficient after multiplication in blue with 2, ये भी 2 और ये 6 हो जाएगा। Copper will be 3, this will be 6 and this will be 3. So 6 and 6 electron will cancel each other out, और सेम रिएक्शन जो होगी, 2 aluminium plus 3 copper 2 positive gives 2 हूँ. aluminium 3 positive plus 3 प्लस copper. कॉपर. Number of electron used will be 6 electron. Write this down. Raise your hand once you're done.
So most of you guys are done. Now this is a particular topic that is going to help you a lot in the nurse technician when we are going to study nurse technician. अभी के लिए तो आप लोग टॉपिक जानिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके बाद आगे बढ़ाएंगे बात को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल electrode potential. So let us write a few points, and that point will we will get later in. And slowly I will start explaining. First we will write first of all the potential developed between metal electrode and its ion in solution is called electrode potential. Is called electrode potential. Early is making the potential developed between metal electrode and the solution of its ion at 1 molar concentration. 1 molar concentration. 1 bar pressure at 298 Kelvin. Is known as standard electrode potential. Standard electrode potential. Now, the electrode potential, you just write this down. Take it. Keep writing with me. You will understand because once you are writing, then also your brain is working. And it's trying to understand whenever I'm saying something. Don't try too much. Now, whenever we talk about the potential, so there are two types of potential that can be developed. One is oxidation potential, and the other is reduction potential. The oxidation potential, reduction potential. For example, I have a solution, and in this I have some, suppose, ion, and X around the same metal. So when X and X, they will come into it, the metal rod, it will have always the electron, and that because it will have this X can eat those electrons and get converted to X metal. One more thing can happen, since X metal has tendency, metals have tendency to lose electrons. So this X can also get converted to X positive, go into the solution and leave one electron. Okay? So both of these things are possible. If, let us suppose, if X has more tendency to you guys were there. Did you guys hear till X positive or X negative both can happen? Yes, sir. Huh? Now let us suppose if I talk about there is a potential, potential difference, if you remember from the 10th standard or if you have started studying in the 12th standard physics, potential तब develop होगा where you have a charge और यहाँ पे negative charge. And तभी यहाँ पे बहुत भी आवाज नहीं है. Is it low or is it not audible at all? Is it muffled? Cracking.
cracking. How about now? अभी ठीक Yeah, है. it's So potential will be developed when you have positive and negative charges, है ना? Then electric potential is developed. If I talk about the potential developed when X positive is getting converted to X, in this case reduction is happening, so reduction potential developed होगा. If I talk about X getting converted to X positive, then this is oxidation happening. You have the oxidation potential developed. So both of these things can happen. So we are going to talk about both of these things. अब देखते हैं उसमें किसका ज्यादा dominant nature होता है. So we will write there are two types of potential. There are two types of potential. Number one, oxidation potential. Number two, reduction potential. Number one लिखेगा oxidation potential. ठीक है. So oxidation potential कब develop होगा? If there is a metal. I hope you guys are writing. अभी बस लिखिएगा. अब इसको सुन लीजिए आराम से. Metal which is solid, it gets converted to metal. It loses an electron, the n positive charge, and it will get n electrons. So oxidation is happening, and we will write this as the electrode potential. As the oxidation, we will write n is getting converted to n positive. And whatever the value of this particular thing will be, will be known as oxidation potential. sir, what This is E? is the electrode potential. EMF बोलते हैं electromotive force. That is how we represent the potential. Okay, sir. ठीक है? That is how we represent the potential. ठीक है? Potential of this particular reaction. The electrode potential. ये electrode E का मतलब electrode potential. ये electrode potential. और नीचे आपको रिएक्शन दिख रहा है M to M, Mn पॉजिटिव हो रहा है तो मॉडल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है. इट टॉक्स अबाउट टेंडेंसी to get oxidants. Tendency to get oxidants. ठीक है. अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है? How many of your family या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों ने interaction or you know about travel agent? Travel agent जानते हैं? Do you know travel Yes. agent? क्या होता है travel Yes, sir. agent? What is travel agent? सर जो ट्रिप्स वगैरह बुक करके देते हैं और टिकट्स बुक कराते हैं. जो ट्रैवल कराता है. जो ट्रैवल Yes. जो ट्रैवल कराता है वो एक जगह कहीं बैठा रहेगा तभी तो ट्रैवल करा पाएगा. उसके पास अलग अलग तरह से लोग आएंगे. People will come to him. So he should be at one place. Correct? Make sense? Make sense? Yes, sir. बोलो. मान लीजिए एक ट्रैवल एजेंट है वो घूमता ही रहता है. एक ट्रैवल एजेंट है वो खुद ही घूमता रहता है हमेशा. So he will not be a good travel agent. Now why? Because if he is flying everywhere while he is in the flight, वो कॉल ही रिसीव नहीं कर पाएगा. He will not even get messages. So customer will wait. एक मान लीजिए 2-3 घंटे की 4 घंटे की फ्लाइट है. कस्टमर कॉल कर रहा है और फोन ही नहीं उठा पाएगा. He is sending him messages भी नहीं आएंगे, right? So he will not be a good travel agent. Who will be a good travel agent? Who sits at one place but coordinates everything. है ना? तो please understand. A good travel agent does not travel. बात समझ आई है?
Correct? Yes or no? Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me. Amna, Mariam Lufani, Sufyan, Taha. Yes, sir. Yes. A good travel agent will not travel. ठीक है? ट्रैवल एजेंट क्या करता? खुद ट्रैवल नहीं करता. ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करता. उसी तरह से समझिएगा यहाँ पे. If a metal has higher tendency to get oxidized, अगर मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो दूसरे को रिड्यूस कराएगा. तो दूसरे को क्या कराएगा? Will act as a reducing agent. इसको इस तरह से भी समझिएगा. समझिए भी समझिए. दिक्कत नहीं, तुरंत नहीं आएगा. If I am getting oxidized, if I am getting oxidized, then I will lose electron. Make sense? Yes or no? Please tell me. If I am getting oxidized, Yes, sir. then I will lose electron. Yes, I will lose electron. I will lose electron when somebody is accepting electron. Make sense? Yes. When somebody, whenever, if I am losing electron, then there should be someone who is accepting electron. So what is happening because of me? The other person is getting reduced. I am getting oxidized. But what am I doing to the other person? I am reducing that person. I am reducing that metal. When Na is losing electron, chlorine is receiving the electron. So Na is reducing chlorine. Na is giving the electron to chlorine. Because of sodium, chlorine is eating the electron. So sodium is acting as a reducing agent. Even though it itself is getting oxidized. सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन सोडियम क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है. मेक सेंस? यस और नो? Yes, sir. Yes, na? So if the oxidation potential is high, then their tendency to get oxidized will be high. अगर हमारा oxidation potential ज़्यादा, then it will get oxidized easily, and I will be having high reducing power. Because if I am getting oxidized easily, I am losing electron easily, and the other metal will eat electron easily. Why the other metal is eating electron easily? Because I am giving him electron. Because I am reducing. ठीक है? अब देखिए जरा. Greater the tendency of, greater the oxidation potential, greater will be tendency to get oxidized. Greater the oxidation potential, greater will be reducing power. Greater will be reducing power. चलिए, आई होप कुछ पॉइंट्स आपने लिखे हैं. उसके बाद तो हम लिखना चालू करेंगे. इफ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, सब समझ में आएगा आपको, है ना? ठीक है. तो रिडक्शन पोटेंशियल यू कैन आल्सो, मतलब आप आगे आगे मेरे से लिख भी सकते हैं. रिडक्शन पोटेंशियल, what is happening here? Metal with n positive charge is going to eat n number of electrons, which is going to get to metal. And we are going to call this electrode potential when metal with n positive charge is getting reduced to metal. And this is known as reduction potential. The next line that I will write is, this is what? This is the electrode potential. The electrode potential. The electrode potential of reduction. Electrode potential of reduction of reaction. This will tell you about tendency to get reduced. Tendency to get reduced. Greater the reducing potential, greater will be tendency to get reduced.
If I am getting reduced, if I am eating electrons, तो किसी का इलेक्ट्रॉन खा रहे हूँ तो वहां से निकाला होगा हमने इलेक्ट्रॉन. So I am oxidizing that other thing. So I will write greater B. Reduction potential will be oxidizing power. चलिए रेज और असाइनमेंट को डन गाइस. अगर किसी को रिडक्शन पोटेंशियल में कुछ समझ रहा है तो प्लीज लेट मी नो. वही उल्टी बातें हैं, बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कुछ ज्यादा खास है, बट स्टिल हम डाउ प्लीज रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग. Waiting for Amna and Mariam to are नाम लेती हो गया काम. चलिए तो एक बात हम कह रहे हैं, ठीक है. तो नोट में वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन. ठीक है, प्लीज राइट दिस अपनी इन द नोट्स. The standard reduction potential that is the SRP is considered as the standard electrode potential. ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहा जाएगा? सिंस वी आर हैविंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो किसको लिया जाए? तो रिडक्शन को लिया गया. अब ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस और एनी बुक, बट किसी को समझना है तो बताइए माय कॉन्सेप्ट कि सर क्यों रिडक्शन को, सर क्या मोहब्बत है थी रिडक्शन से कि रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया? आई विल गिव यू फ्यू सेकंड्स. अगर कोई माइक ऑन करके हिम्मत करके पूछ ले तो हम समझा दे, वरना हम आगे बढ़ते हैं. समझाना है? सर समझा. समझा दें, चलिए ठीक है. तो 5 मिनट और लगेंगे आपके, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान चाहिए ऑल ऑफ इट. फाइन, यस सर. ध्यान से सुनिएगा. अगर हम ये बात करें कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो, ठीक है, तो ये आपको पता है आप कहाँ लेके जाएंगे कॉपर, है ना? तो बस दैट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. कॉपर 2 प्लस में आप अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो देखिए, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरीथिंग, ध्यान रखिएगा प्लीज इस बात को. एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन बोले से आप क्या जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, वी विल गिव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. So when copper 2 positive will get 1 mole of electron, then what it is going to do? Maximum number of copper ions will get converted to copper. अब ध्यान रखिए, for this we require 2 moles of electron, लेकिन आपने कितना दिया है? 1 mole ही दिया है. तो क्या होगा? ये कॉपर प्लस में चेंज होगा? नहीं, इन तो है ना कॉपर. अगर आपको चाहिए, थोड़ा सा डिटेल निकल जाते हैं, आपको चाहिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने दिया कितना? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आपने दिया है, फाइन, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, लिखने की बात नहीं हो रही है.
You have given 1 mole of electron, then maximum number of copper 2 plus ion will eat 2 electrons each. 2 इलेक्ट्रॉन खा लेंगे वो. maximum number of copper 2 plus ion. Why? Because copper 2 plus के बाद जो stable state है, that is copper. It will first देखिए 1 mole of electron, that means they are having billions 10 to the power 26 electrons है हमारे पास. And copper कितना है हमारे पास? Copper भी हमारे पास 10 to the power 26, but requirement कितनी है? 2 into 10 to the power 26 electron की requirement है to go to copper. If I want to convert all copper 2 plus to copper, but रियलिटी क्या होगा? जो कॉपर 2 प्लस को पहले इलेक्ट्रॉन मिला, वो सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन ढूंढे, जब कॉपर प्लस मिला, फिर एक इलेक्ट्रॉन के बाद तो अभी तो बहुत कितने इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन है, वो खाएगा एक और इलेक्ट्रॉन. आपको बात समझ रही है? वो रुकेगा. Why the copper plus the first copper which is getting electron, जो पहला कॉपर आयन होगा, will it stop if the electron is still present? It will neutralize itself. ठीक है. असलियत में क्या होती है, अब तो यहाँ पे चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन दे दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर इट विल टर्न टू कॉपर 2 पॉजिटिव विल टर्न टू कॉपर. और ये भी बात एक चीज क्लियर है, अगर आपने कॉपर 2 प्लस कहा, आपने बोला रिड्यूस करो, तो आप कॉपर तक जा सकते हैं. बट आपने कहा कॉपर है, आप इसको ऑक्सीडाइज करो, तो भाई कॉपर प्लस भी ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर 2 प्लस भी ऑक्सीडेशन होगा. तो जब हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल, तब तो आपको पता है कि न्यूक्लियस फॉर्म में लेके जाना है. रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन का एंड हमको पता है. रिडक्शन का एंड, आई नो द एंड ऑफ रिडक्शन, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. बट ऑक्सीडेशन के लिए हमको कैसे पता कि कॉपर प्लस या कॉपर दोनों ही अनस्टेबल है? कॉपर से तो अनस्टेबल है ना, कॉपर से तो अनस्टेबल है. पॉजिटिव चार्ज हमेशा अनस्टेबल होगा, चार्ज है तो अनस्टेबल होगा. तो फॉर ऑक्सीडेशन वी डोंट हैव द एंड. तो व्हेन आई विल से ना ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, तो पता नहीं चलेगा, फिर आपको पूरा बोलना पड़ेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर 2 पॉजिटिव. बट इफ आई से रिडक्शन ऑफ कॉपर 2 प्लस, तो एंड पता है तो कॉपर. रिडक्शन ऑफ Ag पॉजिटिव, एंड पता है हमें Ag. रिडक्शन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, एंड पता है हमें Zn. रिडक्शन ऑफ Na पॉजिटिव, एंड आई नो सोडियम. ठीक है. सो बिकॉज वी आर यूजिंग लेस वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट रिडक्शन, इसी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल को लिया होगा. ये तो मेरा दिमाग कहता है ये. आई मीन कई किताबों में नहीं लिखा, बट आई थिंक सो. We have a definite end when we talk about reduction, but when we talk about oxidations, we have options. कि plus में 1 positive 2 positive कुछ भी हो सकता है. ठीक है. That is why it is taken as standard reduction potential. I have not, but I have presented this theory to many teachers and many of my colleagues. They say that this is one of the most NCERT कुछ नहीं. NCERT ने बोला है IUPAC considers standard reduction potential as the standard electrode potential. That's it. ना, तो कन्वेंशन की बात है. आपने इसको पॉजिटिव मान लिया एक्सेस, इसको नेगेटिव मान लिया एक्सेस, उल्टा भी कर देते तो क्या ही हो जाता है ना. कन्वेंशन है, बस कन्वेंशन है. ये तो ऐसी बातें थी जो आपकी जरूरत की नहीं है, हमने बोला तो हम बता. हाँ, आगे हम क्या कहने वाले थे. ठीक है. जैसे आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव से आप कॉपर जा रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जा रहे हैं, तो इट विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. Let us suppose this is x volts, है ना. इसमें you are getting x volt of energy, or you are giving x, whatever x can be positive, negative, कुछ भी हो सकता है. X volt of energy is involved in this transformation. अगर हम उल्टा जाएं, copper to copper 2 positive, this will be standard oxidation potential. But it is reverse of the previous thing. It is the reverse of the previous reaction. That is why it will be minus x volt. है ना. प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाय द वे, चलिए पूरा ही लिख देते हैं. कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, मतलब कॉपर 2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मीन अंडरस्टूड होना चाहिए. सो वी कैन से दैट फॉर अ particular redox couple, oxidation potential it is equal to minus of रिडक्शन पोटेंशियल. तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आएगा सर? अरे नहीं भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब नेगेटिव होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है ना. व्हाट डू यू नीड टू डू इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम रिडक्शन पोटेंशियल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू रिडक्शन पोटेंशियल? इधर से इधर जाना, उधर से इधर जाना. क्या करो? चेंज साइन बदल दीजिए, बस बात खत्म. गाइस समझ में आया कि नहीं है भाई? बताओ.
अरे खेल खेल में पढ़ाते रहे, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? टेल मी गाइस। Yes, sir. यस। ठीक है, Yes, sir. रेज योर हैंड वंस यू आर डन। जिन लोगों का वेकेशन स्टार्ट हो गया है, प्लीज पुराने चैप्टर्स में जो भी गैप्स हैं एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए सबसे पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी। से पहले भी प्रैक्टिस हो सकती है, if you have not completed the notes, complete कीजिए notes को। if you are not able to do the questions that we have done in the class, priority should be to do those questions। ठीक है, अगर ये तो मीन दीज आर द थिंग्स व्हिच आर, मतलब ये ऑब्वियस है, क्लास हो गई तो आप क्लास में जो कुछ कराया है, वट एवर क्वेश्चन, कंसेप्ट छोड़ दीजिए, उस कंसेप्ट से कोई सवाल आ जाए तो क्या करना होगा उसको हम बोल ही नहीं रहे हैं। जो सवाल कराया गया है वो तो आपको बिना देखे आना चाहिए। ठीक है, मोस्ट almost all of the questions that we do in 11th and 12th standard are procedural questions। उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हिम्मत करके, हिम्मत लगी है ना, बहुत हिम्मत लगती है। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये मतलब जो पढ़ाई है, इन मतलब बोर्ड्स लेवल की अगर पढ़ाई, पढ़ाई मुश्किल चीज है ना। वी आर नॉट ट्रेन टू स्टडी, मतलब इस तरह की स्टडी के लिए दिमाग तो शायद नहीं बनाया। आई कंप्लीटली तो है, हिम्मत वाली चीज मुश्किल चीज है, बैठना पढ़ना समझना, नहीं आ रहा उसको करना 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 करना, बट हिम्मत लगेगी। कोई सवाल हमने कराया है, वी हैव डन अ फ्यू वन क्वेश्चन एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट ऑन योर ओन, इवन दो यू अंडरस्टैंड इट, लेट अस सपोज आप बार बार कोई स्टेप भूल जा रहे हैं, ये करना होता है, कितना लंबा सवाल है, 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, नहीं हो रहा 10 बार कीजिए। 11वीं बार तो आप नहीं, आपका पेन करेगा, हाथ भी नहीं करेगा। नॉन लिविंग थिंग जो पेन है आपके पास, वही पेन खुद ब खुद चलेगा। लेकिन वो 10 बार करने के लिए भले ही उसमें आधा घंटा टाइम जाएगा, देख के कीजिए। पहली बार करेंगे पूरा देखना पड़ेगा, सेकंड बार में यू विल हैव टू नॉट सी द, आप फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करते हैं, सॉल्व साइड खुद से कर। तीसरी बार कीजिएगा, देन यू विल नॉट लुक एट द फॉर्मूला, वैल्यूज प्लग इन करने के लिए, है ना। टिल द 10th टाइम, 11th में तो आपका कलम करेगा, आप पेन छोड़ भी दीजिएगा, सिर्फ कॉपी में तो पेन खुद ब खुद मजाक है, लेकिन फिर भी आई होप यू अंडरस्टैंड द, मतलब आप ऐसा समझ रहे इस चीज का। ठीक है, तो हिम्मत से, भले इसमें आधा घंटा लगे, आपने पढ़ाई कितनी देर की? आधा घंटा। लेकिन एक ही चीज को 10 बार करने में बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। एंड दोज पीपल, दो स्टूडेंट हु कैन डू दिस, और खास तौर पे उन जगहों पे सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसको पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसमें आप उतना अटकिएगा ही नहीं, है ना। हिम्मत तो वो है ना कि आप जिस सवाल में, जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट में अटकते हैं, उसमें उस चीज को 10 बार करना। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, myself have went through that phase, but you have to do that। ठीक है, आधा घंटा निकालिए, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट दोस क्वेश्चंस जहां पे आप अटकते हैं। समर वेकेशन, भले ही आप इसका नाम वेकेशन रख दे, बट इट इज नॉट अ वेकेशन फॉर यू। ये आप, दिस इज द टाइम जब आपका परसेंटेज मतलब रैपिडली इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, प्लीज, बहुत आपको आसानी, वेकेशन के बाद काफी आसानी हो जाएगी। आसानी क्या होगी उसमें, बस ये होगा कि आपको, आपको बैठने का जो, मतलब इफ यू आर सिटिंग टू स्टडी ना, कभी तो स्कूल जाते हैं, क्लास करते टाइम स्टडी का नहीं मिलता है, बट आपकी अगर आदत होगी 3 घंटे सेल्फ स्टडी करने की, तो उससे फायदा ये होगा कि आप आगे भी 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। वो सेल्फ स्टडी का 3 घंटा सेल्फ स्टडी आपके लिए आसान हो जाएगी, पढ़ाई तो क्या ही आसान होगी, है ना। वो तो धोखा है कि 10th तक पढ़ लो फिर तो आसान है, फाउंडेशन अच्छा होगा, 11th 12th अच्छा होगा, है ना। फाउंडेशन, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत इसी तो जरूरी है, बेसिक मजबूत होने चाहिए, बट क्या ही आसान होता है उससे, है ना? आसान ये होता है कि आप वो 3 घंटा जो मुश्किल से बैठते थे, अब वो आप आसानी से बैठ, ठीक है। हम उसको धोखे में नहीं रखेंगे कि समर वेकेशन में बस मेहनत कर लो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। पढ़ाई नहीं आसान होगी, पढ़ने में आपका मन लग जाएगा, वो 3 घंटा बैठना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now there are few points that ये तो चीज समझने वाली थी। इसके बाद में there are some things that I'm going to ask you guys to memorize। We have seen that reducing power, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हम क्या कह रहे हैं?
जी, सारा, ताहा, मरियम, सुफियान, आमना, Yes. सारी बात समझ में है ना। मेरी सब्जेक्ट की बात नहीं है, या यू मस्ट हैव एक सब्जेक्ट हर किसी का होता है जो वीक होता है, उस सब्जेक्ट मतलब जो एक सब्जेक्ट होता है जो हर किसी का अच्छा होता है। अच्छे सब्जेक्ट में भी एक चैप्टर होता है जिसमें आपको थोड़ी सी रिलेक्टेंस होती है, हिम्मत करके, है ना। मतलब अपने आप को समझाइए बैठ के, है ना, यार करना है करना है। 2 3 3 दिन डालेंगे, लेकिन रिमाइंड करते रहिए करते रहिए करते रहिए अपना। 5 मिनट सर बैठ आप जाती है सब। जी बढ़िया, बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर मैंने पूछा आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था। मेरे लिए हाँ सर। क्या बताया, विश्वास नहीं होगा आप लोगों को। 11th क्लास के इक्विलिब्रियम तक हमको कुछ केमिस्ट्री नहीं आती थी। इक्विलिब्रियम याद है, फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है। हम्म। जी सर। इक्विलिब्रियम याद है, इक्विलिब्रियम। हाँ सर। Yes, sir. 11th क्लास के इक्विलिब्रियम तक हमें कुछ भी केमिस्ट्री नहीं आती, ना मोल तो सर कंसेप्ट आता था इक्विलिब्रियम तक, ना हमको क्या, ना हमको उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आता था, ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती थी, ना केमिकल बॉन्डिंग आती थी। ठीक है। सर ये तो मेरा इतना वाला हाल। तो मिला है। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद बस ये उसमें मतलब हम दोस्ती तो खैर खैर तो नहीं है, लेकिन असल में हुआ ये था ना कि हम बड़े डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन उस बड़े डॉक्टर के पास मतलब मेरे मर्ज का इलाज नहीं था, डॉक्टर सूट नहीं किया हमको। ठीक है, तो जो टीचर थे मेरे, उसने ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, बहुत सारे बच्चों को उनसे समझ में आता था, कुछ हमको नहीं आता था समझ में, हम थे और एक दो दोस्त थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था उनसे। तो नहीं मतलब फिर टीचर हमने चेंज किया, फिर आ गए। और ऐसा आया कि अब पढ़ा रहे हैं। उन्हीं का तो उन्होंने ही आया ऐसा कि फिर हम पढ़ाने लगे रिलेटिव। बट आई रियली लव फिजिक्स, आई रियली लव, स्टिल रियली लव्ड। क्या क्यों 5 चूज करते हैं, अभी भी हमको फिजिक्स से बहुत मोहब्बत, मैथ से बहुत मोहब्बत। बायो, सर बायो बायो कौन पढ़ता है? मैथ्स कितनी खराब है। मैथ्स क्या है? कितनी गंदी होती है। मैथ्स गंदा हो, थोड़ा सा ना एक आदमी को ना अपने अंदर दे शुड हैव दिस, मतलब ये उन लोग, मैथ उन लोगों का अच्छा होता है जो लोग थोड़ा सा, क्या कहें हम, अपने आप को तुरंत कहाँ समझते हैं। जिनको लगता है कि हम बहुत जहीन हैं, वो फिर अपने आप हाँ को सोचते हैं कि नहीं, हम हमको रटना नहीं है, हमको रटना नहीं है, रटने वाला हम नहीं लेंगे। फिर रटने वाला नहीं लेंगे तो मैथ्स लो, है ना। जो जिनकी जहनीत से मतलब ये जहनीत तो फिर बचपन से दिलाई जाती है ना, बचपन से ये कहा जा रहा है, अरे बहुत दिमाग है, बस पढ़ता नहीं है। सभी बच्चों का ये हाल रहता है, सही पेरेंट्स अरे बहुत दिमाग, लेकिन बस पढ़ता ही नहीं है। तो दिमाग होना तो आसान काम भाई, वो जब जब वक्त लगाए ना, वही वही फैक्टर है। अगर आप 70% ला रहे हैं, ठीक है, 70% तो हम क्या ही बोल रहे हैं, हम आपको चीज बताते हैं। अगर आप 50 से 80%, कितना है यहाँ पे, 30% ये है ना, इसमें मेहनत लगेगी। और एक मेहनत लगेगी आपको 80 से 95 जाने में। 95, 92, 91, 92, उसकी बात 95 की बात कर रहे हैं। दिस इज अ चेंज ऑफ 15%। बट आई होप अगर आप केस ए को लें और केस बी को लें, तो केस बी में मेहनत ज्यादा है। इवन दो परसेंटेज 15 ही इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 30% इंक्रीज कर रहा है, बट मेहनत बी में ज्यादा है कि नहीं? डू यू ऑल एग्री? यस करते हैं सर। एग्री इस बात से, है ना। कि यहाँ पे तो 15, जिस बच्चे का 80 आ रहा है उसको 95 लाने में बहुत मेहनत लगती है, बच्चा रो देता है। क्योंकि 80 से 95 लाने का मतलब आप हार्ड सवाल कर पा रहे हैं। 80 तक तो प्रोसीजरल क्वेश्चन जो हम बोलते हैं ना, घास काटना, वो हो जाता है। तो जो बच्चे तेज होते हैं, 80 तक तो उनका मतलब टच करने लगता है, लेकिन 80 से 95 जाने में लगती है थोड़ी। बहुत देर समझ आई ये बात कि दिमाग तो सबके पास होता है, फर्क तो वही करना है, मतलब
एक और चीज ये है, अगर आपके पास इतना ही दिमाग है तो आप अपने दिमाग को ये क्यों नहीं समझा पा रहे कि पढ़ने के लिए बैठ जाओ। किसी के माँ बाप अगर बस ये कह के, अगर आपको नहीं कहना चाहिए ऐसे कि मतलब बहुत दिमाग है बस पढ़ता नहीं, अरे भाई इतना ही दिमाग, मतलब हम अपनी ही बात करते हैं, हमसे कहते थे छोटे में कि मतलब मेरा बहुत दिमाग है। और मतलब ये कुछ चीजें होती है, लाइक इफ यू ग्रास्प वेरी इजीली इन द क्या बोलते हैं क्लासेस, क्लास में आप बहुत आंसर कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम्स में वो चीज नहीं निकल के आ रही। बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा, अभी भी होता है, आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, वो आर सीरियस अबाउट स्टडीज, दैट दे अटेंड द क्लास, दे ग्रास्प वेरी वेल इन द क्लास, वो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, लेकिन वो चीज रिजल्ट में नहीं नजर आती है। ठीक है, तो तभी बच्चे को कहते हैं ना, अरे दिमाग बहुत है लेकिन पढ़ता नहीं। भाई इतना दिमाग है तो अपने दिमाग को समझा ले, पढ़ना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को यही समझाओ, अरे भाई तुम इतना ही ज़हीन हो तो पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हवा लग रही है बात की। Yes, sir. चलिए खैर, बहुत बातें हो गई। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो हम अपने लिए कह रहे हैं। अरे आप अगर, हम अगर इतने ही ज़हीन है, इतना ही दिमाग है मेरे पास, हम पढ़ने क्यों नहीं बनते। is directly proportional to reduction potential and is inversely proportional to oxidation potential, है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। एंड वी नो दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे से कैसे हैं, इनवर्सली रिलेटेड, so we can also say reducing power is inversely proportional to reducing potential। और असलियत में आपको असल में यही दोनों चीज याद रखनी है, जो हम ब्लू से कर दे रहे हैं वो, बिकॉज आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया जाएगा बिकॉज आई बैक सेड we are going to use reduction potential as the standard electrode potential. Standard electrode potential will be given, and that will be the reduction potential. So reducing power is inversely proportional to reduction potential. Oxidizing power is directly proportional to reduction potential. आपका कौन सा सब्जेक्ट है मरियम, बायो? यस सर। ऐसे बायो में भी दो किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बायो लेते हैं, कुछ बच्चे तो होते हैं जो मैथ्स छोड़ दो। कौन से वाली कैटेगरी में है आप मरियम? सर दोनों में। अरे तो दिल के कुछ रखने को अलग ही ख्याल रखता है, बायो एक ही पसंद नहीं है, कैटेगरी में रहेंगे आप, एक ही कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मैथ छोड़ के, फिजिक्स उससे ज्यादा मुश्किल है। मैथ्स को तो आपने छोड़ा, मगर मैथ्स ने आपको, आपने बिल्कुल मैथ्स को भी तो छोड़ दिया, है ना, मैथ्स ने आपको नहीं छोड़ा। नहीं यस सर। छोड़ेगा भाई, आप ये सोचो, आप एमबीबीएस करने लग जाओ, आपके पास मान लेते हैं क्लिनिक में दवाई है एडल्ट की, तो उसकी कुछ पावर होगी। आपके पास आ गया 4 महीने का बच्चा, जरूरी है दवाई देना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, कंसंट्रेशन टर्म्स के हिसाब से इतना एमजी का है और ये बच्चा 4 महीने का है, तो किस पावर से करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी कि नहीं कैलकुलेशन। मैथ्स हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स है जरूरी, है ना। मैथ से भागने वाले तो डॉक्टर बन के क्या करेंगे, वो 40 साल के आदमी का दवाई 4 महीने के बच्चे को लो खाओ भाई, मैथ नहीं आता हमको। इवन फॉर दैट मैटर, खैर मैथ तो मैथ है। अक्सर बच्चों को दोज आर इन मैथमेटिक्स, उनको फिर केमिस्ट्री के लिए ये चीज अच्छी होगी कि भाई केमिस्ट्री का क्या ही काम, हमको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, हमको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, हमको तो मतलब कोडिंग करना है, तो केमिस्ट्री का क्या ही काम। सही बात है भाई, केमिस्ट्री का कोई काम, बट यू हैव टू प्ले द कार्ड्स यू हैव बीन गिवन। आई होप आप इस बात को समझते हैं कि जो पत्ते आपको दिए गए हैं उन्हीं पत्तों में खेलना है, आपके पास कोई अलग से पत्ते नहीं आएंगे, तो कोर्स में है तो करना है। बीए के एग्जाम में केमिस्ट्री आएगी तो केमिस्ट्री भी करनी है, बायो आता जेई के एग्जाम में तो बायो भी करना पड़ता, भले उसका इस्तेमाल ना हो, बट मतलब होता है कुछ ना कुछ, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो जाया नहीं जाता। इट विल गिव यू सर्टेन डिसीजन मेकिंग टूल्स, क्या तो आपको क्या ही बताएं हम, तो सर वो या मिट्टू और केमिस्ट्री नहीं होती तो हम भी तो नहीं मिलते आपको।
यस ये तो है। चलिए खैर बहुत बकवास हो गई। लिख लिया ना सबने? सबने लिख लिया? Yes, sir. जल्दी बताएं। तुमने लिख लिया? तो अगली बार नहीं लेंगे। ओके थोड़ा सा व्हाट सुफियान यू सेइंग समथिंग? जैसे यस, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर कर अरे सुफियान यार ढूंढ लो यार, तुम कुछ जगह एकदम नहीं अवेलेबल है क्या? हाँ सुफियान नहीं है। देखिए, मतलब आप माइक ऑन करना दुश्वार है आपके लिए, माइक भी नहीं ऑन कर पा रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है, you can see that standard reduction potential है। A पॉजिटिव से A, Ag पॉजिटिव Ag, Ag2 पॉजिटिव से Ag, सब में रिडक्शन हो रहा है। इन सब का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग। ये बस प्रैक्टिस है, ऐसे कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। हम आपको आदत दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास A से K पॉजिटिव हो, है ना, उल्टा, तो क्या हो जाएगा? -2. If I am going from K plus 2K, if I am going from K plus 2K, then -2.93. उल्टा करेंगे तो sin K plus 2.93 volts. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. समझ में आया सबको? Yes. है ना? This is reduction. हम क्या कर रहे हैं? Oxidation. When I go from reduction to oxidation, then what happens? The sign of potential changes. क्रिकेट के लिए इसको कीजिए। इसकी टेस्ट दे पाएंगे कि नहीं, और बात करिए। नेक्स्ट क्लास में से पढ़ाएंगे हम आप लोग को। आज नहीं हो पाएगा आपको। जल्दी जल्दी कीजिए। मेंशन द आंसर ऑन आवर व्हाट्सएप। बस साइन चेंज करना आदत बना रहे हैं बस हम आपकी, कि आपको रिडक्शन दिया हो तो ऑपरेशन को कैसे चेंज करना है। साइन चेंज कीजिए ध्यान देके, बस इसमें गलती ना हो।